रास्ते में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बट वी एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू बी हियर। एक साल से हमारा ये चर्चा हो रही थी सिटी पैलेस के साथ कि एक नया फेस्टिवल क्यों नहीं स्थापित किया जाए जयपुर में, और हमने ये सोचा कि जयगढ़ फोर्ट को खास लेके, क्योंकि टीम को तो यही मकसद है कि बिल्ड हेरिटेज के साथ हमारा काम ज़्यादातर है। तो जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की जब शुरुआत हुई थी, वो इस कारण से शुरुआत हुई थी कि हमने कहा कि जयपुर और राजस्थान की जो बिल्ड हेरिटेज है उसका हम कुछ बिल्ड हेरिटेज के लिए कोई फ़ायदा हो, तो उसी कारण से हमने डिगी पैलेस में ये फेस्टिवल शुरुआत की थी। आज के दिन में वी आर एब्सोल्युटली डिलाइटेड that we are announcing the Jayagઢ Heritage Festival. It will be at Jayagઢ Fort at the end of December, 27th, 28th, 29th of December. The festival will focus on the built heritage of Jayagઢ, और जैसे महाराज जी अभी बताएंगे आपको, the fort itself dates back to the 12th century. It is one of the most amazing architectural wonders of this part of the world. तो हर जगह, हर दीवार, हर जगह हम उसको स्पेशल एक्ट्स कमीशन करेंगे ताकि जो जयगढ़ का जो हेरिटेज है वो बाहर निकले। So we are absolutely delighted, and I want to take this opportunity to thank Maharaja Padmanabh Singh. Narendra ji is not here right now. Kalanika and her colleagues at City Palace for coming together with us to make this festival, not just for Jayagઢ, not just for Jaipur, not only for Rajasthan but for India. We again will advertise this festival across the world. December is a great time for the world to come to India, and we hope that when they come to a place like Jaipur, not just in the city of Jaipur, but in Amer, all the way to Kundas, everybody will benefit from this festival. All the hotels will benefit from the festival, and we'll be able to say that in India, of course, weddings is a big thing, as we all know, but our culture, our heritage, our tradition, and our built heritage is an equally amazing opportunity to be able to leverage India's smart power. So with this, I'm going to ask Maharaj Padmanabh Singh to say a few words about Jayagઢ and the heritage and tell you a little bit about the festival. सबसे पहले तो आप सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ आप जुड़े आज। सबसे पहले काफ़ी गर्मी है, बरसात का मौसम है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप यहाँ आए, हमें हमारी बात रखने का आपने एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। जैसे संजय ने हमें बताया, हमें बहुत खुशी होती है आज जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल को अनाउंस करने में। ये फेस्टिवल हमने एक लिमिटेड कैपेसिटी में लास्ट ईयर भी किया था, जिसमें हमने एक हमारे लिए खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और उसमें हमने बहुत एक ब्रीफ मैनर में जो हमारा मैसेज है, हमारी जो बात है, वो हमने रखने की कोशिश करी थी। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आपका भी बहुत हमारे साथ समर्थन रहा था। काफ़ी सारे हमारे मीडिया के जो बंधु हैं सब बता रहे थे हमारे साथ, सब ने जुड़ के फेस्टिवल का जो है आनंद उठाया था। और उसके बाद हमने काफ़ी विचार किया, हमारी टीम में इंटरनली हमने काफ़ी विचार किया, और सब ने ये सजेस्ट किया कि जिस प्रकार से पिछले कई सालों से 10-15 सालों से संजय जी ने और उनकी टीम ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो बहुत ही मैसिव लैंडमार्क ब्रांड खड़ा करके जो दिया है, मैं कहना चाहूँगा जयपुर वासियों की तरफ से कि आपने हमारे शहर के लिए जो एक कार्य किया है, एक्चुअली commendable. I don't think that there are many such events across the world that have done so much for aggregating tourism for any city in the world. So हम सभी ये लगा कि he would be an incredible partner to kind of not only carry out this vision for us, but also to develop on this vision. I think he brings with him and his team not only the expertise but also incredible amounts of experience in the field. So हमने ये बात संजय और टीम के साथ छेड़ी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि he felt as excited about this as us. So we're very excited to launch this in its new form.
in a much more increased capacity. पिछली बार की तरह फोकस जो है हमारा इस बार भी विद हेरिटेज के अराउंड रहेगा, बट हम इस बार कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स जो आपके फोक म्यूजिक के हो गए, लोकल आर्टिस्ट क्राफ्ट्समैन है हमारे राजस्थान के, उन्हें हम किस तरीके से प्लेटफॉर्म दे सकें, प्रमोट कर सकें, उनकी कलाओं को कैसे प्रमोट कर सकें। तो ये सारे जो हैं एलिमेंट्स रहेंगे। इसमें हिस्ट्री के अराउंड काफ़ी चर्चा रहेगी। आई थिंक जैसे सोनिया ने कहा कि हमारे यहाँ एक वेडिंग का जो मार्केट क्रिएट हुआ है, जिसमें होटल्स ही नहीं, काफ़ी सारे जो लोकल बिजनेसेस हैं, जूलर्स हो गए, आपके टेक्सटाइल बिजनेस हो गए, इतना बेनिफिट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक और इंडस्ट्री पे वर्क करें। जिस तरीके से लिटरेचर फेस्टिवल में हमने सबको देखने को मिला है कि एक सक्सेसफुल मॉडल है, इसको अब हम कैसे स्केल अप कर सकें और इसको अलग अलग वर्जन में हम कैसे प्रस्तुत कर सकें। तो मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही जनरली टूरिज्म के लिए इस देश शहर और ऑल्सो स्टेट के लिए एक बहुत अच्छा टूरिज्म का मौका है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसमें सारे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे जोड़ सकें, और साथ ही जो हमारा फाउंडेशन, जो हमारा बेस आइडिया है कि हमारे जो लोकल आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन, म्यूजिक, किसी भी फील्ड में आप ले लें, उनको हम हमारे साथ में लेके कैसे चलें। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पिछली बार की तरह आप हमारे साथ इस बार भी जुड़े और हमारे को एक जो है प्लेटफॉर्म प्रदान करें। मैं चाहूँगा कि हम जयगढ़ फेस्टिवल का टीवी चलाएं। So while we wait for the audiovisual, just to add, एक चीज शायद सबको पता नहीं है कि कई साल से हमारा ये प्रयत्न रहा है फिकी के तौर से, क्योंकि मैं उनका को-चेयर हूँ, कि क्रिएटिव सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ के एक सेक्टर बनाया जाए, रिकग्नाइज किया जाए। So now the government has recognized that the creative industries or the creative sector is a sector, and as we know, this creative sector really will be driving jobs, will be driving investment into local economy, will be contributing to local economy, and this we believe in places like Rajasthan, in Jaipur, is absolutely vital for its future. जैसे कि हमें बताया गया है कि $1 million of investment into built industry creates 9 to 11 jobs. $1 million of investment into the creative sector creates 99 to 111 jobs. Places like Rajasthan are ripe for this kind of activity. So we are hoping that not just the Jayagढ Heritage Festival, but many of the other festivals that happen across Rajasthan will continue to grow Rajasthan's economy in the coming years. So if there are any questions, we'll be happy to take them, and we will keep coming back to you. ये तो केवल अनाउंसमेंट है हमारे पास। इस वक्त हम प्रोग्राम के बारे में जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बाद में आएगा। We'll do a major program release later in early October once we come back for a main press conference, but this is just for a month. I'm Ankur from ADV Thane. एक कमी शक्ल तो बताएं इस जयगढ़ फेस्टिवल की, क्योंकि पहले जब लास्ट ईयर किया गया था तो हमें कला देखने को मिली, शिल्प देखने को मिला, हेरिटेज देखने को मिला, इवन लास्ट ईयर भी यहाँ पर टॉक शो हुए थे। इस बार क्या किस तरह की शक्ल होगी जयगढ़ फेस्टिवल? तो जैसे महाराज जी ने बताया कि the idea will be that we'll have performing arts, we'll have visual arts, we'll have a lot of sound and light. फर्क ये होगा कि we'll have international acts as well, but जो कुछ भी हम लाएंगे it will be specifically commissioned to suit that particular venue. जयगढ़ में इतने सारे venues हैं which are stunning,
आप लोग पता नहीं देखा होगा सिस्टर्न, देखा होगा, अभी ने इस बार आके देखे तो वहाँ पे हम सोच रहे थे कि वहाँ पे क्या करें, क्राफ्ट बाजार ऑफ कोर्स, बट कैन वी डू क्राफ्ट विद अ डिजाइन intervention. It will be specific to each of these areas. So, I think you are aware of the world's biggest treasure trove search because it was done at Jayagढ. Zaris was not born there, but that aroused worldwide publicity because the vote was done to find some hidden treasure. How are you going to incorporate? Because that's a beautiful part of the history, and nothing was found. Nothing was found. That's what we were told. So how are you going to incorporate the great treasure trove hunt? So one is, of course, I think they were digging to find the treasure. Jayagढ is the treasure. Today, Jayagढ's built heritage in the walls in itself is the treasure. In terms of doing a treasure hunt, it's a great idea. So for kids, etc., during the day, we look at doing a treasure hunt because there's so many wonderful unexplored places in Jayagढ. And as Maharaj said, the history of Jayagढ Fort is something that we need to look back to and understand what the history meant. Today there's much discussion about invasions and so on and so forth, but the great Maharajas of Rajasthan and Jaipur specifically, when they were creating these magnificent forts, they were for a reason, and we need to revisit that in many ways. Today primarily, as you know, as we're seeing around us, yesterday the incident that happened in America, very sadly, can we use the arts to be able to push back from violence and hatred? This has always been at the core of everything that we do. Can we educate young people? Can we push back on ignorance? By pushing back on ignorance, can we push back on hatred and violence? So we don't see this kind of violence that we're seeing all around us. It's not just about India anymore. It is about the world, and today, because we're interconnected, anything that happens anywhere in the world comes back. We are looking at the climate crisis, for example. I mean, देखिए क्या हो रहा है climate crisis के साथ, कहाँ पे बाढ़, कहाँ पे famine, it's impacted Switzerland. I mean, forget anywhere else. Of course, it will impact us. It has impacted us. So the festival will also focus on, for example, the environment. पुराने ज़माने में जैसे आप लोगों को पता है, आमेर के साथ एक बड़ा बाउल ही था, स्टेपल हुआ करता था, जहाँ पे पानी की ट्रीटमेंट होती थी. So some of these old techniques that we use, can we look at them afresh? Because this was wisdom that we had lost. My second question is, as you are holding Jayagढ for heritage, I mean, it's customary on the part of any Rajasthan festival that Ganga and Manganiyar are the end thing. We have in Jullar also has its music. Jullar has its songs, a lot of folk is there. But it's not highlighted as much. Whenever some I think that's the effort will be not just to do one aspect of Rajasthan. राठौड़ों की बढ़ाई करते हैं, हमारे गाँव की कुछ बढ़ाई करते हैं. करेंगे, जरूर करेंगे. To add to your first question, Sandra did touch upon the fact that we will be creating certain walks, guided walks that kind of help you explore the unexplored parts of Jayagढ. Something that we did last year as well. In fact, we had a very senior team of our assistant director at the fort, as well as other historians that will do that for us. But Sandra mentioned how we want this festival to actually go beyond its usual barriers. We want this to be much more fun. We want this to be more than just about the art and craft, and we want this to be about the impact that art and craft and through platforms like these we can have on the larger scheme of things. So one thing that I want to mention here in particular is the fantastic water harvesting system that we have at Jayagढ. Sandra mentioned that the whole system that comes up from Amer. But in Jayagढ itself, we have a system of takas, which I think, having traveled to various parts around the world, you have incredible underground water storage systems in Turkey and elsewhere. I think that our water harvesting system, not only is it extremely sustainable, something that the whole world today is talking about, but it's actually also very, very progressive
for its time. And I think that this, through obviously your support, through this platform, we want to talk a little bit about the importance of Jayagઢ and its water storage system, and how that can impact modern ways of water storage, water harvesting, as well as other sustainable practices. So this definitely, across our messaging, will be a very integral part.